per our schedule. Now I'm moving towards the second chapter, Principles of Management, half of which I had already just done. Starting it with NCERT. When you are working, कोई कंपनी जब कोई काम करती है, तो there are certain policies, certain philosophies, certain rules and regulations. And इनके जो bases होते हैं वो हमारे होते हैं एक principle. Now the principle is not a single word कि चलो अब हम ये कहते हैं मेरा principle ये है. For different dealings we have different principles. So while we are working, while we are managing a business, जब आप बिजनेस को मैनेज करते हो, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, तो उसके लिए यू नीड टू हैव सर्टेन फिलॉसफीज एंड प्रिंसिपल्स जिसके अकॉर्डिंग द कंपनी कैन रन. नाउ दीज प्रिंसिपल्स जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे, दे हैव बीन फॉर्म्ड विद many experiences over a long period with observation, practicing. They are not one day story. And not that ki jitne principles hai, everything we are able to use it. We use it according to the situation. जहां हमारा situation जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, फ्लेक्सिबली हम उसको मॉडिफाई करते हैं. Some of them can be used in the factory level, some of them can be used at the administrative level, and some of them can be used at both the areas. There have been many theories about the principles. बहुत सारे theories हैं, but we basically हम दो जनों को जो है we take it as two versatile figures, Taylor and Fayol. It's not that ki we don't have other people. Yes, we have many, but इन दोनों को क्योंकि इनके principles के base पर ही शायद बाकी बने. And these principles, those children who will be doing their BBA, you will also have there. Even in MBA, we have this chapter, but that's it. That's in length. यहाँ पर we would be only discussing what are the principles, उनके nature कैसे रहते हैं, and those two figures, Taylor and Fayol's, उनके principles क्या थे. In your boards, एक question आपका आता है to find out the nature. सेकेंड आपके आता है इम्पोर्टेंस और तीसरा आइडेंटिफिकेशन. द आइडेंटिफिकेशन कैन बी ओनली ऑन वन प्रिंसिपल और इट कैन बी 2 or 3. इट कैन बी अ कंप्लीट क्वेश्चन और उसमें आपको 2 या 3 हो सकते हैं. एंड दे कैन बी ऑल्सो 2 फ्रॉम Fayol's, 1 फ्रॉम टेलर. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. एंड we can expect 2 MCQs and 1 long question from this chapter. So let us start the chapter along with NCERT. This is certain principles, business principles, which are given, and it is of Toyota Motors, जिनका मानना है honor the language and law of every nation, respect the culture and customs, provide clean and safe products,
create and develop advanced technology and provide outstanding products or services, foster a corporate culture which enhances individual creativity and teamwork, pursue growth and harmony, work with business partners in research and creative to achieve stable long-term growth. तो ये उन्होंने जो है अपने 7 बेसिक रखा हुआ है, जिसके आधार पर, जिसके अकॉर्डिंग दे हैव डेवलप देयर कल्चर ऑफ वर्क. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स इज कि व्हाट डज इट मीन that they have given Toyota Motors are driven by principles that serve as broad guidelines for stating the vision as well as the way to achieve it. उन्होंने अपने ब्रॉड गाइडलाइंस, यानी कि सबसे पहला जो हमारे पास हमेशा, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन में आपको हमेशा बोला एसेंस ऐसा, तो उसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड गाइडलाइंस. ऑलवेज कीप इट, आइडेंटिफाई द ब्रॉड गाइडलाइन. And similarly, many other business enterprises have followed various principles in their working over a period of time. A number of thinkers, writers have also studied it. In fact, there is a long history of management thought. As I have told you, there are many people. We have studied about many people, but main contributions हमने हमेशा जो use किया है वो है Taylor and Fayol's. You can see evolution of management thought has been very fascinating. In this chapter, we would be studying about Frederick Winslow Taylor, maybe a single question on his full name, and Henry Fayol, who have been associated with the classic management theory. Both of them have contributed immensely towards the management as a discipline. Now, study of management as discipline, मतलब management को एक particular subject की तरह. Then in your exam, this has many times come. Taylor was an American mechanical engineer, whereas Henry Fayol was a French mining engineer. That's the difference. टेलर जो था वो मैकेनिकल था और फ्रेंच माइनिंग था. टेलर गेव द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, whereas Fayol emphasized administrative. टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं एंड Fayol को हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं. दिस नीड ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. Now, what is principle of management? ऊपर हमने पढ़ लिया था already. The broad guidelines. मतलब आपको आपकी teachers जो हैं, they just give you a guideline that you need to prepare your project in this manner. उसके अंदर they tell you the elements that they require, the color, the size, the look, and on those guidelines you develop your project. Same is the principles. A management principle is a broad and general guideline for decision making and behavior. For example, while deciding about promotion of an employee, one may consider the seniority, तो other may consider principles of merit. इसको आप अभी अगर आप में से कोई भी बच्चा, if you are all you speak to your brothers, sisters, elders, or friends who are working, you see there are 2 different companies. जितने भी आपके इंडियन या ओल्डन उसमें जाएंगे वो सीनियोरिटी लेकर चलते हैं. Whereas जो आपके आजकल जो नए मॉडर्न मतलब की है, I have seen they go on the principles of merit. मतलब आप अच्छा कर रहे हो, you are promoted. Whereas I would tell you one example. I am very much associated to my school, so my examples are related to the school only. While we were having हमारे स्कूल के अंदर, any teacher who did very good would be given extraordinary
increment and maybe even promoted. On the same ground, मतलब कि in the same school, जब आपकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कोई पोजीशन खाली होती थी, they would go only with the seniority basis. तो दोनों चलते थे, but the area was different. Like there are many teachers who have been awarded the best teacher, एक साल में 2 बार increment. Normally it is 1 year में एक increment होता, but we have been given two increments. We had a vacancy in our school, one of our in Yojana, where it was in that branch. We had one vacancy where the हमारी जो administrative head थी, she was leaving the job. So there was an emergency because she was leaving. She had to go back to Bangalore, and it was an urgency. So there was no time to get the advertisements and all. हमारी प्रिंसिपल मैम ने कहा, why should we go out? Why not? हमारे जो स्कूल में टीचर्स हैं, those who have been working for so many years and they have the experience, they know about the culture, why not we give them that promotion? So luckily 2 teachers were selected. One was new and another was old. And the position went to the older teacher since she had been working in that school for more than 20 years. That is basic उन लोगों ने रखा हुआ है. So this is principles. इनको हम पॉलिसीज में भी ऐड करते हैं, बट पॉलिसी हो जाता है जब हम उसमें स्टिक हो जाते हैं. प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस. One may distinguish principles of management from those of pure science. They are not rigid. जैसे हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं साइंस के अंदर भी, जितने भी आपके न्यूटन की थियरीज हैं, दे आर ऑल प्रिंसिपल्स, बट दे आर ऑल स्टैटिक एंड दे हैव अ कॉज एंड इफेक्ट स्पेसिफिक फॉर्मूला. हमारा ऐसा नहीं है. हमारे में क्या है, दे आर रिजिड बिकॉज वी डील विद द ह्यूमंस. तो for the desired results we may modify it. They deal with the human behavior and are to be applied creatively given the demands of the situation. Human behavior is never static and so also technology. भाई हमारा business technology आपके humans उन्हीं से चलता है. तो आपको उसके according अपने principles में changes लाने पड़ते हैं. For example, in the absence of information and technology, a manager could oversee only a small workforce that too within a narrow geographical space. जब पहले हमारे पास CCTV कैमरा या मतलब कि IT वगैरह नहीं था, तो we were not having this much of exposure. But now it has presided over large business empires spread across the globe. Infosys headquarters in Bangalore boast of Asia's largest flat screen in their conference room, from where the managers can interact with their employees and customers in all parts of the world. This is not only with Infosys, but this is with many of the companies where they are using these technologies. In developing an understanding of the meaning of principles is very important. It is useful what these are not. The principles, ये वाला जो paragraph है, these can be a part of your statement analysis or assertion and reason. The principles of management should be distinguished from techniques of management. टेक्निक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं. प्रिंसिपल्स होते हैं एक गाइडलाइन जिसके अंडर हम अपनी चीजों को बनाते हैं. प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला एंड टेक्निक होता है उसे कैसे खोलना है, उस अम्ब्रेला को कैसे खोलना है. सम अम्ब्रेलास जस्ट आप बटन दबा सकते हो, किसी को आपको हाथ से पुश करना पड़ता है. सो दैट इज द डिफरेंस.
Techniques are procedure or methods which involve a series of steps to be taken, whereas principles are guidelines to take decision or actions while practicing these techniques. This can be the statement analysis class 12. It should also be understood as being distinct from values. Principles हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम में वैल्यू भी बोलते हैं. वैल्यू बहुत मॉरल होता. हम प्रिंसिपल्स में इतनी मोरालिटी नहीं रख सकते हैं. We have to keep the basic truth or guidelines and we have to frame as per what our situation says. They have moral connotations. Principles are basic truth or guidelines for behavior. They are general rules for society, whereas principles are for working situation. However, while practicing principles, values cannot be neglected as business have to fulfill social and ethical responsibility. For example, इसके अंदर आपका जो है मतलब ये एक assertion and reason question बन के आ रहा है. तो इसके अंदर आपका जो है एक प्रिंसिपल है फेयोल का इक्विटी. प्रिंसिपल है आपका इक्विटी. नाउ इक्विटी सेज equal treatment of men, women, gender, caste, anything. बिजनेस को एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है तो इक्विटी उसका एक एग्जाम्पल है जहां पर द बिजनेस नीड्स टू हैव equal treatment of people. So this is the assertion and reason. So now what is the nature of principles of management? Principles are general propositions which are applicable when certain conditions are present. जैसे हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, तो वो वाला किस सिचुएशन में यूज होगा? These have been developed on the basis of observation and experimentation and personal experiences. We in our school have experience. Many of the teachers experience this. They tell us that in our school there is a pressure from the management as well as from our. तो अब हम किसकी सुने? तो when principles are derived, ये जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको लेकर बनाया जाता है. Depending upon how they are derived and how effective they are in explaining and predicting managerial behavior. They contribute towards the development of management both as art and science. क्यों? Science इसलिए because it's cause and effect, and art इसीलिए क्योंकि it is creative. Derivation of these principles may be said matter of science and their creative application may be regarded as art. These principles lend credibility of a learnable and teachable discipline to the principles of practice of management. As such, ascent to managerial position may not be matter of birth. हम लोगों ने पढ़ा था कि anyone can become a manager irrespective of what the person's qualification is. It is not necessary कि एक इंसान को MBA होना होगा. So these principles, if the person has learned over, if these principles have, that makes him a good manager. Clearly, management principles have gained importance with increasing professionalization of management. These are guidelines. They denote a cause and effect relationship. While functions of management are the actions to be taken while practicing management, principles help managers to take the decision while performing these. जैसे जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों को अपने सामने रखना चाहिए. ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको जब मैं करवाऊंगी ना तो आई राइट इट इन दैट
which comes under planning, which comes under organizing. So what are the principles we take? So now let us come to the nature first. Universal applicability means they are intended to apply to all types of organization, business, small, large, public, private, manufacturing, and service. However, the extent of their applicability would vary with the nature of organization. स्कूल में हमारा कुछ और होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ और होता है. For example, for greater productivity, work should be divided into small tasks and each employee should be trained. This principle is applicable to a government office where there is a diary dispatch clerk जो मेल को रिसीव करता है, डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसको कंप्यूटर में डेटा चढ़ाना होता है. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ लिमिटेड कंपनी जहां छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं. बट कैसे डिवाइड करना है, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी साइज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द नेचर ऑफ देयर वर्क. जनरल गाइडलाइन means the principles in action, they are general but do not provide ready-made straight jacket solutions to all managerial problems. This one has come in the assertion and reason. This has come. अगर आप सोचो हमने तो डिसिप्लिन अडॉप्ट कर रखा है, तो देन व्हाई वी हैव नॉट अचीव? तो दे आर ओनली द गाइडलाइन. One principle gives you the guideline, but its effect to tackle the problem will depend from one business to another, one manager to another. This is so because real business situations are very complex and dynamic. However, the importance of principle cannot be underestimated because even a small guideline helps to solve a given problem. For example, in dealing with a situation of conflict between two departments, a manager may emphasize the primacy of overall goals. इसके अंदर अगर दो सिचुएशंस हैं, जैसे कि एक मैनेजर है, कोऑर्डिनेट करना, उसको कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, तो he would be going under the guidelines formed by practice and experiment. They are the collective wisdom of managers as well as experimentation. For example, it is a matter of common experience that discipline is indispensable for any purpose. घर पे भी जरूरत है, स्कूल में भी जरूरत है, even if you are standing at the stationery shop, वहां भी जरूरत. आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं, they just become aggressive. So discipline is everywhere. This principle finds mentioned in this theory. On the other hand, in order to remedy the problem of fatigue, an experiment may be conducted to see the effect of improvement of physical condition to reduce stress. डिसिप्लिन को ही एक वर्क लेवल पर जब हम कर रहे हैं, अरे वर्कर्स पे कर रहे हैं, we need to ensure the two different situations. How we can ensure? Like when you go to the any area जहां आपको खड़ा होना पड़ता है, what are you told? Stand in a queue. But when it comes to the elderly people, senior citizens or disabled, we say you can just क्रॉस द लाइन. आप लाइन को जो हो तोड़ के आप आगे आ सकते हो. हम उसके अकॉर्डिंग, या फिर देयर माइट बी अ सेपरेट लाइन फॉर द सीनियर सिटीजन, देयर माइट बी अ सेपरेट लाइन फॉर द women. So discipline is important, equality is important, but how we are going to ensure, that depends. Flexible. The principles of management are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely. आपको ऐसा ही करना है.
They are flexible, can be modified by manager when the situation so demands. They give the manager enough discretion to do. Discretion मतलब उसको इतनी authority होती. The degree of concentration of authority or its dispersal will depend upon the situation and circumstances of each enterprise. अभी आप पढ़ोगे. Now there are some companies जहां सारे decisions are taken only by the management. They don't allow the junior level people to even intervene. Whereas there are some companies jahan particular areas are taken by top level and some are taken by the junior level. तो ये जो दो कंपनीज हैं, this depends कि वो पहली कंपनी में कितने लोग काम करते हैं. What is the kind of work they are doing? Is it right to involve the junior level? So this depends on situation. So that जो manager है, it depends on कि हाँ भाई whether he is able to do it, whether it is right to do it. Mainly behavioral. ये जो principles हैं, they are not applied on machines. They are not applied on computers. They are applied on the people who are working. Management principles aim at influencing behavior of human beings. Discipline क्या है? To ensure proper manner. Unity of command क्या है? So it is not for the things, it is for the people. It is not, these principles do not pertain to things. कुछ है जैसे आपके order है, you can say it is, we can say we also use for things, order, when you do it. But most of the others are only for the people. Cause and effect relationship. ऊपर आपने पढ़ा था प्रिंसिपल्स आपके साइंस और आर्क है. तो साइंस क्या होता है? Cause and effect. Every action has a reaction. The principles of management are intended to establish a relation between cause and effect. मतलब इसको अगर हम करते हैं तो क्यों किया, एंड इसका इफेक्ट क्या रहेगा. अगर हमने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया तो व्हाट विल बी इट्स बेनिफिट. So they can be used in similar situation in a large number of cases. That is how we do it. They tell us if a particular principle was applied in that situation, what was its effect, whether it was positive or it was negative. The principles of management are less than perfect since mainly they apply to human behavior. In real life, situations are not identical. So accurate cause and effect may be difficult to establish, but they help to establish to some extent. In situation, ये एक बार आया था long back. In situations of emergencies, जैसे हमारा स्केलर चेन में आता है, it is desirable that someone takes charge and others just follow. But in situations requiring cross-functional expertise, such as setting up a new factory, more participative approach is advisable. ये एक बार आया था. Contingent बहुत ज्यादा पेपर में आता है दिस आइडेंटिफिकेशन के. Contingent मतलब it depends upon the prevailing situation at a particular point of time. This is one of the most important one which the application has to be changed as per requirement. Now, what is the difference between flexible and contingent? Flexible is हम उसको time to time change कर सकते हैं. And contingent is उस situation में whether to apply or not. वो
The application has to be changed as per requirement. For example, employees deserve fair and just remuneration. But what is just and fair is determined by multiple factors. It may be the contribution of employee, paying capacity, also prevailing wage rate. What may be in your factory might not be there in your other factory. Contingent का मतलब है आपकी एक फैक्ट्री में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता. आपके एक what you call as ब्रांच में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता. The authority and reporting relationship. The authority and relationship. Maybe in one branch it is a tall hierarchy. Tall matlab number of people are more. Whereas in another branch only 4 people are working, तो वहां पर आपका short है. So it depends. Now it is about Kiran Mazumdar Shah, a business woman and CEO of Biocon. ये आपके जो है, this will be one of the, you can say, source question. So how she has taken, this will be the, मतलब उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को एक नया डायमेंशन दिया था. So why do we need these principles? First, अब आपका थोड़ा एग्जाम से बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस. First, these are general guidelines. Again, repeated guidelines. तो जब आप इन गाइडलाइंस को यूज करते हो, आप अपना दिमाग लगाते हो, तो what happens? You come across a real world situation. अब आपको लग रहा है प्रोडक्शन इज अ सिंगल वर्ड. प्रोडक्शन वर्ड एक है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखते हो तो आपको पता लगता है कि the work has to be divided into small parts. So then you use the principle unity of division of work. The principles provide the managers with useful insight into real world situation. Adherents add to their knowledge, ability, and understanding the situation and circumstances. It also helps the manager to learn from past mistakes, conserve time by solving recurring problems. As such, management principles increase his efficiency. For example, a manager can leave routine decision making to his subordinates, deal with exceptional situations, जिसको हम delegation बोलते हैं. इनको हम principles of delegation बोलते हैं. कर सकता है. Optimum utilization of resources and effective administration. Resources यानी कि human, money, material. आपको उसको हम efficiency कब कहते हैं? Minimum cost, best results. Minimum time, exact result. तो efficiency and effectiveness तभी आता है. They have to be put on optimum use. Means the resources should be put in such a manner that they should benefit maximum benefit with minimum cost. जैसे आपका cause and effect. Wastages associated with a trial and error approach can be overcome. टेलर एंड फेयर दोनों के प्रिंसिपल्स में है. नाउ ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है? करके देखते हैं. चलो किया, तुक्का ठीक लग गया, द राइट, लेकिन नहीं हुआ, देन द टाइम एंड द मनी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग हैज बीन वेस्टेड. तो उसकी जगह अगर हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल है इस काम को इस तरीके से करने से दिस वर्क विल बी डन विथ मिनिमम, तो दैट वुड हेल्प यू आउट. जैसे आपका टेलर है, टेलर का एक टेक्निक है, टेलर का एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मेथड स्टडी. मेथड स्टडी
नाउ दिस मेथड स्टडी क्या बोलता है, आपको किसी भी काम को करने के लिए देयर शुड बी वन प्रिस्क्राइब्ड मेथड. सिमिलरली ही यूजेस मोशन, यानी आपका जो फिजिकल मूवमेंट, आपके जो सामान है उनका फिजिकल मूवमेंट. नाउ इफ वी आर नॉट यूजिंग दोस, तो व्हाट विल हैपन, हमने ट्रायल एंड एरर किया, मे बी दैट डिड नॉट वर्क, लेकिन जो टाइम टेस्टेड आपके प्रिंसिपल्स है, हम उसके अकॉर्डिंग गए, उस तरीके से हमने मेथड को और मोशन को फॉलो किया, तो वी हैव सेव द टाइम एज वेल एज द रिसोर्स. They equip the manager to foresee the cause and effect relationship of their decisions and actions. So the wastages can be overcome. Effective administration necessitates impersonalization of managerial conduct so that managerial power is used with due discretion. Principles limit the boundary of managerial discretion so that their decisions may be free from personal prejudice and biases. ये आपका जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कंपनीज इंटरेस्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इन डिसाइडिंग द annual budget for different department rather than personal preference, the manager is discreet to bound by the principle of contribution. Scientific decisions already आप ऊपर पढ़ चुके हो, they are based on cause and effect. तो cause and effect जहां पर भी हमारा है, they are all scientific. They are not based on bias, prejudice. They are based on certain objective assessment. मतलब उसको हमने cause and effect के through we have analyzed it. They must be timely. Sorry, they are based on facts, thoughtful and justifiable in terms of purpose. They must be timely, realistic, and subject to measurement and evaluation. So they help you to make the right decision. They emphasize on logic rather than blind faith. और कंपनी में जब हम काम करते हैं, तो हमें मैंने ये सोचा, ये वर्ड हम नहीं सोच सकते. We need to emphasize on the logic one. कई बार हम बोलते हैं ना, बिल्कुल इलॉजिकल बोलता है ये बच्चा, ये इंसान. तो लॉजिक क्या है? Which is based on a science, a rational decision. रेशनल का मतलब सेम, कॉज एंड इफेक्ट. मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट. if the principles have been there, then they can be modified and as such help the managers to meet the work changing requirement. हमने पढ़ा principles are flexible, so they can be adapted to the dynamic. Dynamic का मतलब क्या होता है? Changing situations. For example, management principle emphasize on division of work and specialization. In modern times, this has been extended to the entire business, whereas companies are specializing in their core competency and non-core. I'll explain this. What does it mean? डिविजन ऑफ वर्क का वैसे मीनिंग होता है क्लास 12, काम को डिवाइड करना. काम को डिवाइड करना. फॉर एग्जाम्पल, in many of the schools, I don't know about your schools, but I know about some of the schools where there are external specific exam, मतलब कि examiners as well as science lab technicians, जो सिर्फ लैब को या फिर लैब रिलेटेड जो काम है वो करते हैं. Since the school is big, they have more work, whereas इन अदर स्कूल्स, मतलब और जो दूसरा टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ थियोरी पे ध्यान करता है. यानी कि थियोरी एक टीचर पढ़ाता है, प्रैक्टिकल दूसरा टीचर पढ़ाता है. अब
अगर हम इस प्रिंसिपल को देखते हैं तो दिस इज कि काम को डिवाइड किया, मतलब एक काम था उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन इस सेम प्रिंसिपल्स को इवन इट हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस, जहां पर मतलब उन्होंने डिवाइड कर दिया अपने काम को, जो आपके मेन एक्टिविटीज हैं दैट इज डन बाय द टॉप लेवल्स एंड दे गिव द अदर वन टू द आउटसाइडर्स। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एडवर्टीजमेंट कंपनी खुद नहीं करती है। पहले जमाने में एडवर्टीजमेंट वाज डन बाय द कंपनी, बट आजकल ऐसा नहीं है। जितने एड आते हैं दे आर ऑल आउटसोर्स्ड। इनफैक्ट स्टाफिंग कई कंपनीज होती है, नाउ दे जस्ट गिव देयर रिक्वायरमेंट्स टू द कंसल्टेंसी। वो लोग खुद जो है ना ही बायोडेटा को लेते हैं, ना एडवर्टीजमेंट देते हैं, ना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, एवरीथिंग इज डन बाय समबडी एल्स। Now they have divided this work. This is also one of the division of work. और ये क्यों किया है? For a better changing environment. 19 पुराने जमाने के एड को कभी देखना, उसमें अगर आप देखो तो यू विल सी, यू विल स्माइल, बट अभी का जो देखोगे तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड, व्हाट पीपल वांट। So now the companies are focusing on main areas, और ये जो पीआर वाला जो मतलब की है, this is all outsourced. In this context, one may cite the decision of Hindustan Unilever in diversing non-core business of chemicals and seeds. Some companies are outsourcing their non-core activities like share transfer management, advertisement, जो अभी आपको मैंने बताया, the so much that even core process such that R&D manufacturing are being outsourced. जैसे जिसको हम बोलते हैं बीपीओ या केपीओ, हमने 11th में पढ़ा था। जैसे बीपीओ में क्या होता है, we all are having telephones, we all are having internet connection, we all are having everything. Someone is just, किसी का सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल है, दूसरे का जियो है, तीसरे का कोई और है, लेकिन जब हमें सर्विस चाहिए, like the net is not working, then what do? We call, हम कहते हैं हमने कंपनी को कॉल किया, the actual company is not in picture, it is their BPO जो ये काम करता है। यानी कि उन्होंने अपने उस, जहां पर ग्रेवेंसेस है, जहां पर उनके मतलब की जनरल इंफॉर्मेशन है, दे हैव गिवन दिस टू आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट। वो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, दूसरे काम कोई और करते, एंड दिस इज द नीड ऑफ द, अगर वो खुद करेंगे ना तो दे वुड नॉट बी एबल टू हैंडल द करंट सिचुएशन। Fulfilling social responsibility, the increased awareness in the public limit forced by business exceptionally limited company to fulfill their social responsibility. आजकल सोशल का मतलब क्या है? इक्वल रिम्यूनरेशन, इक्विटी, देयर आर सो मेनी। Management theory and principles have also evolved in response to these demands. However, the interpretation of the principles also assume newer and contemporary meanings. If one were to talk of equity today, पहले equity मतलब equal money, but आज it is dealing with business associates, customer care, everything. So as an application, we find that public sector undertaking have developed entire township. For example, BHEL has developed Ranipur in Haridwar. One may also cite the story of Shri Mahila Grah Udyog,
वो हम बाद में पढ़ेंगे अबाउट लिज्जत पापड़. तो इट हैज हेल्प्ड इन सोसाइटी, मतलब उन्होंने डब्बे वाला जो हमने पढ़ा था, दैट्स ऑल्सो, it also provides the base for training, education and research. जब हम बीबीए एमबीए वगैरह करते हैं, वहां पर हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को, जो बच्चे सीए करते हैं, those who do CA, those who pursue, वो लोग क्या करते हैं, they go for the articleship. What do they do there? They learn the real life situation. एक लॉयर के नीचे उसका जो, मतलब कि उसके नीचे जो काम करता है, वो रियल लाइफ सिचुएशन को देखता है. सिमिलरली जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दे हेल्प इन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च ओवर द पीरियड. दे आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थियोरी. दे आर बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. जैसे आप देखोगे कि देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम जिसमें हमारा होता है कैट मैट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. तो टेस्ट क्यों होता है? क्यों आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है? Why your aptitude is taken? Because they want to check whether you are interested, really interested in pursuing this. जब आप कहीं नौकरी करते हो तो आपके ट्रेड टेस्ट, आपके मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट देखा जाता है. Why? These principles provide basic groundwork for the development of management as a discipline. Professional courses like MBA, BBA also teach them as part of their curriculum at the beginners level, जो मैं आपको starting में ही बता चुकी हूँ. In BBA, it is in the very first semester. These principles enable refinement of the practices as well as facilitating the development of new management टेक्निक्स. जैसे आजकल ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, ये सब कुछ जो है अब हम लोगों ने किया है. पहले ये सब चीजें नहीं थी, बट नाउ इट इज कि यूजिंग दिस प्रिंसिपल्स वी हैव अंडरस्टूड कि और भी चीजें हमें जो है वी हैव टू ऐड. इनको हमने डिलीट करना. इट इज जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया, लेकिन हम टाइम टू टाइम जब हमें चाहिए तो हम उनके अंदर माइन्यूट चेंजेस करते हैं. बट इन प्रिंसिपल्स इट डिपेंड्स आपको कंप्लीटली उसको लेना है या नहीं लेना है इन योर सिचुएशन. इन योर सिचुएशन, like discipline for a small child is something different for discipline for an elder. Two schools have different methodology to inculcate the same. A single school might be having two different methodology, one for the seniors, one for the juniors. In a school, the senior teachers, mean the teachers who are teaching the senior classes, were supposed to wear sari at all the cost. Whatever the situation is, they were not allowed to deviate from their, this, and they were punished. पनिश कैसे पनिशमेंट मिलती थी? अब आप सोचोगे मैम आप टीचर्स को कैसे पनिशमेंट मिलती थी? वी हैड वन डे जिसमें हम लोग जो है वी कुड वियर सूट और समथिंग लाइक. वो दिन फिर हमें साड़ी डालनी पड़ी. लेकिन यंगस्टर्स के लिए वो चीज नहीं थी. नर्सरी प्रेप की टीचर्स जो है वो कुछ भी पहन के घूमती थी because they were young. So this is what we call as principles of management. We will be starting with Taylor in the next class. Tomorrow, we would be doing this part.